Hello students. So in the previous class we were discussing about the different kinds of STDs and we have also discussed about AIDS, acquired immunodeficiency syndrome और acquired immunodeficiency syndrome जो होता है बहुत एक chronic disease है, एक chronic condition है which does not have any kind of treatment. इसका कोई specific treatment नहीं है. It is not completely curable. Okay. So keeping that into mind, we have already gone into that. Today we'll discuss another topic, that is infertility. Okay. Now, what do you mean by this word infertility? What is the term infertility? Fertility means the capability to reproduce. So infertility can be defined as it is the inability to produce children in spite of unprotected sexual intercourse. मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, कोई बैरियर मेथड यूज नहीं कर रहे हैं आप, कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं कर रहे हैं, and even after that if they are not able to bear a child, then that is called as infertility. Okay. Now, do not get confused with the word infertility and sterility. Sterility word is little different. Sterile condition is that condition where the male or female individual is incapable to produce gametes. ठीक है? Sterile मतलब individual gamete produce नहीं कर पा रहा है. Male individual male gamete produce नहीं कर पा रहा है. Female individual female gamete produce नहीं कर पा रहा है. But when you are talking of infertility, they are able to produce gametes, but they are not able to have a child. Okay, so that is the difference between infertility and sterility. Infertility can occur both in males and females. एक general conception है हम लोगों का कि infertility females में ही होता है, and in Indian society it is very predominant this thought. But remember, infertility can occur in both males as well as in case of female individuals. There can be many reasons for infertility. Infertility के लिए बहुत सारे reasons हो सकते हैं. Physical condition, congenital condition, immunological condition and psychological condition are a few of them. ठीक है, ये कुछ उनमें से reasons हैं, कुछ conditions हैं जिसके चलते infertility हो सकता है. Okay, infertility clinics help in diagnosis and treatment of these conditions. तो ये जो conditions है कहाँ पे diagnosis होगा इनका होता है infertility clinics. Infertility clinics एक यूनिट होता है आपका मेडिकल सर्विसेज में, या फिर आप बोल सकते हैं हॉस्पिटल या क्लिनिक्स में. तो ये जो होता है आपका infertility clinic, वहाँ पे डायग्नोसिस होता है. if the couple is not able to bear child, they go to this clinic and वहाँ पे different test किए जाते हैं to identify if this condition is there, and after that उसके treatment methods भी वहाँ पे ही devise होते हैं. और वो क्या होते हैं treatment methods? Individuals with infertility can take help of ART. इन टेक्निक्स को बोला जाता है assisted reproductive techniques to have children. तो अगर किसी का इनफर्टिलिटी है तो कभी कभी मेडिकेशन भी किया जाता है, मेडिसिन आर आल्सो गिवन, बट द मोस्ट एफिशिएंट वे इज द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स टू हैव चिल्ड्रन. नाउ व्हाट आर दिस टेक्निक्स? ये कौन कौन से टेक्निक्स हैं? द ARTs इंक्लूड IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ZIFT, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, GIFT, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ICSI, इंट्रा cytoplasmic sperm injection, AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एटसेट्रा. तो ये सारे कुछ टेक्निक्स के नाम हैं. तो चलिए काम करते हैं. लेट अस गो इनटू दिस एंड सी दिस टेक्निक्स वन बाय वन. ओके, we'll start with the first one, that is test tube baby program which involves IVF, in vitro fertilization. तो कॉमनली हम लोगों का एक नोशन होता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी जब बोला जाता है हमारे दिमाग में एक पिक्चर आता है कि बेबी टेस्ट ट्यूब के अंदर ही फॉर्मेशन हो रहा है. But it is not true actually. Test tube baby, it is called so because the zygote formation generally takes place in a laboratory, in a test tube. Okay? लेकिन जाइगोटिक डेवलपमेंट के बाद बाकी जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है वो किसी मदर के बॉडी में होता है. ठीक है, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज. टेस्ट ट्यूब बेबी हम लोग यूज कर रहे हैं टर्म, लेकिन टेस्ट ट्यूब बेबी कंप्लीटली टेस्ट ट्यूब में फॉर्मेशन नहीं होता. सिर्फ फर्टिलाइजेशन और अर्ली एम्ब्रियोनिक डिविजन्स टेस्ट ट्यूब में कैरी आउट होता है. उसके बाद बाकी जितने भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होते हैं वो मदर के बॉडी के अंदर होता है. मींस दिस जाइगोट विल बी ट्रांसफर्ड टू द मदर्स बॉडी नाउ. ओके, ova from a female donor and sperm from a male donor are collected and stimulated to fuse to form a zygote in vitro. ना ये जो वर्ड इन विट्रो है इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिए. यू जस्ट concentrate or you just keep focus on this word. This we will be using very commonly. The word in vitro literally means in artificial conditions. दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है इन विट्रो which means in artificial condition or in lab condition, but अगर वही चीज naturally हो रहा है that is called as in vivo. In vivo means in natural conditions, in vitro means in artificial conditions or in a laboratory. ठीक है,
तो द फॉर्मेशन इज नोन एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इस प्रोसेस को बोला था इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है ओवम और स्पर्म का, लेकिन वो एक आर्टिफिशियल मीडियम में हो रहा है, वो नेचुरल कंडीशन में नहीं हो रहा है। इट इज नॉट टेकिंग प्लेस इनसाइड द फेलोपियन ट्यूब। दैट इज द रीजन वी कॉल दिस एज IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन हम लोग टेस्ट ट्यूब में कर लेते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को जैसे बताया हूं कि ये सिर्फ जाइगोट फॉर्मेशन टेस्ट ट्यूब में होता है, उसके बाकी सारे प्रोसेस वो सब होते हैं इनसाइड द मदर्स बॉडी। ओके, so after this process is carried out, after in vitro fertilization is carried out, the zygote or early embryo, जाइगोट या फिर अर्ली एम्ब्रियो मतलब 8 सेल स्टेज, जिसको हम लोग मोर्यूला बोलते हैं, उतने सेल स्टेज तक आपके टेस्ट ट्यूब में फॉर्मेशन होगा, उतना प्रोसेस टेस्ट ट्यूब में कैरी आउट होगा। बट वंस इट हैज रीच्ड दिस स्टेज, द 8 सेल स्टेज और इनफैक्ट इन जाइगोटिक स्टेज, is either transferred to the fallopian tube or to the uterus of the mother. आइदर ये फेलोपियन ट्यूब या फिर मदर के यूटरस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। नाउ दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, एज यू कैन सी हियर, हियर इट इज द ओवेरी, दिस इज द यूटरस एंड दिस इज द वेजाइना। सो फर्स्ट egg is collected, sperm is collected, both of them are fused together in a test tube. Then this 8 cell stage embryo is formed, which is morula. Now this 8 cell stage morula is injected through the uterus, through the vagina into the uterus, और यहाँ पे वो अटैच हो जाएगा जैसे implantation होता है, the natural mechanism of implantation, similar to that, it will get implanted into the uterine wall, and then further development, pregnancy development will take place inside the mother body. Now those mothers are called as surrogate mothers. Sometimes biological mothers are used, biological mother के body में भी किया जा सकता है, लेकिन कभी कभी वो surrogate mother में होता है। surrogate mother मतलब non biological mother. Surrogate mother is that mother who will bear the child, who will carry the child, but the ovum will not be her own. तो ovum उस फीमेल से लिया नहीं जाता, वो बायोलॉजिकल मदर से लिया जाता है और सैरोगेट मदर के बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। So this technique is called as test tube baby program, which includes the in vitro fertilization. Now the next technique, GIFT and ZIFT, दो टर्मिनोलॉजी है। GIFT stands for gamete intrafallopian transfer and ZIFT stands for zygote intrafallopian transfer. GIFT is the transfer of ovum from a donor to the fallopian tube of a female incapable of ovum production. ठीक है, अगर ओवम प्रोडक्शन प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा है किसी फीमेल में, या फिर ओवम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, then that condition this is used. तो यहाँ पे एक ओवम को ट्रांसफर किया जाता है फैलोपियन ट्यूब में इन ए फीमेल पेशेंट। ठीक है, कभी कभी स्पर्म भी डाला जाता है। इन सम केसेस यू विल फाइंड कि इफ द स्पर्म इज नॉट एबल टू रीच टिल द ओवम, if the sperm motility is less, so in that condition sperm can also be injected into the fallopian tube. sperm हो या फिर ovum, दोनों gametes होते हैं। तो जब हम लोग गैमेट को फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करते हैं आर्टिफिशियली, दैट इज कॉल्ड एज GIFT. ZIFT भी सिमिलर है, लेकिन डिफरेंस इतना है कि ZIFT रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ जाइगोट, नॉट द गैमेट। यहाँ पे जाइगोट को ट्रांसफर किया जाता है फैलोपियन ट्यूब में। जैसे इससे पहले वाले में हम लोग देख रहे थे इन द प्रीवियस वन टेस्ट ट्यूब प्रोग्राम, वी वर लुकिंग कि जाइगोट को हम लोग यूट्रस में इंजेक्ट करते हैं। यहाँ पे जाइगोट को इंट्रोड्यूस किया जाता है इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल इंडिविजुअल। ठीक है, now this is how the technique is carried out. आप लोग देख सकते हैं by the help of a tube, catheter बोला जाता है, these are small tube like structures. तो इसी के हेल्प से जाइगोट को इंट्रोड्यूस किया जाता है फैलोपियन ट्यूब में। Okay, now this is the ovary and on your extreme corner you can see this is the wall of the uterus. Okay, so these are two techniques, GIFT and ZIFT. The next technique is ICSI, intra cytoplasmic sperm injection. Now this technique is used in such conditions where fertilization is not able to occur, मतलब sperm ovum को fertilize नहीं कर पा रहा है किसी भी कंडीशन से, तो वहां पे ये टेक्निक ज्यादा बेनिफिशियल होता है। And as the name suggests, intracytoplasmic sperm injection means the sperm is injected into the cytoplasm of the ovum. Okay, it is the in vitro process of formation of zygote directly by injecting the sperm into the ovum. तो यहाँ पे हम लोग कोई नेचुरल मेथड ऑफ फर्टिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्टली स्पर्म को ओवम के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है, फर्टिलाइजेशन लिटरली मींस द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। तो स्पर्म और ओवम अगर नेचुरली फ्यूज नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग उसको आर्टिफिशियली फ्यूज करवा लेते हैं। नाउ दिस इज द टेक्निक, ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी, बाय द हेल्प ऑफ ए नीडल sperm is injected into the cytoplasm of the ovum.
वो डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है. Now these are structures called as micropipettes, जिसका needle होता है और ये बहुत fine structures होते हैं which can be introduced directly into a cell. Okay, so as you can see here, ये जो आपका blue color का बड़ा सा cell है, this is the ovum, और यहाँ पे एक छोटा सा sperm है which is directly injected into it. Now when sperm fuses, sperm nucleus will fuse with the ovum nucleus, it will form a zygote. So this is called as intracytoplasmic sperm injection. The next technique is called as AI, artificial insemination. Inseminate means to release the semen into the vagina. Okay, release of semen into the vagina is called as insemination, which generally occurs during the mechanism of copulation. नेचुरल कंडीशन में कॉपुलेशन के टाइम पे सेमेन वेजाइना में रिलीज होता है, लेकिन अगर किसी रीजन से द मेल इंडिविजुअल इज नॉट एबल टू रिलीज द सेमेन इनटू द वेजाइना or sufficient amount of semen is not present that can be used or that can carry out the process of fertilization, in that case this technique is useful. Okay, the collected semen from a donor is artificially introduced into the vagina or into the uterus. तो वेजाइना में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, कभी कभी यूट्रस में भी इंजेक्ट किया जाता है. और यहाँ पे ये देखिए एक टर्म और ऐड हो गया, IUI. अगर यूट्रस में इंजेक्ट किया जाएगा तो उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नहीं बोलते, उसका एक मॉडिफाइड वर्जन होता है. और मॉडिफाइड वर्जन क्या है उसका? इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन. मतलब यहाँ पे वेजाइना में इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, ये डायरेक्टली यूट्रस में डाल दिया जाता है. दैट इज कॉल्ड एज इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन. ओके, so the semen is artificially introduced into the vagina or the uterus. This technique is used in case of males with low sperm count or ejaculation issues. If ejaculation is not proper in some males, or if they are having very low sperm count, as I told you, if the sperm will not be able to reach, अगर semen में कम sperm है तो वो यूट्रस क्रॉस करके फिर फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाएगा, तो क्या करते हैं, डायरेक्टली यूट्रस में छोड़ देते. तो अगर लेस कंसंट्रेशन होता भी है स्पर्म का, लो काउंट होता है स्पर्म का, फिर भी कुछ स्पर्म फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाएंगे. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. नाउ दिस इज द टेक्निक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. एज यू कैन सी, यहाँ पे पहले सेमेन को कलेक्ट किया जाता है, दे आर वॉश्ड. वॉश्ड मींस उसमें अगर कोई इंप्योरिटीज है या फिर बाकी जो प्रोटीनेशियस सब्सटेंस होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है और सिर्फ लाइव स्पर्म्स को यूज किया जाता है. Now the sperms by the help of a syringe are injected directly into the uterus, and here you can see the sperms are moving upwards to the fallopian tube, and if they come in contact with the ovum in the fallopian tube, they will carry out fertilization, and after fertilization it will lead to pregnancy. So these are the methods of ART, assisted reproductive technologies. Okay, and they are useful in case of infertility. Treatment of infertility के लिए ये सारे मेथड्स यूज किए जाते हैं. सो जस्ट गो थ्रू देम, इनका नाम याद रखिए आप लोग, एंड टेक्निक्स. ओके, सो विद दिस वी कंप्लीट द चैप्टर ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एंड इन द नेक्स्ट वी विल मूव ऑन, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक्स that will include genetics. Okay, thank you everyone.